सत श्री अकाल जी। कनाडा इमिग्रेशन से न्यू अपडेट है। कनाडा के जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने काफ़ी अनाउंसमेंट करी हैं रिगार्डिंग विज़िटर वीज़ा और वर्क वीज़ा, नैनी की फ़ाइल्स हैं, एक्सप्रेस एंट्री हैं। तो इनका जो है बैकलॉग काफ़ी पड़ा है, तो अब इसको रिलीफ देना है कि इस पर पूरा काम हो सके और टाइम टू टाइम रिज़ल्ट आ सके। तो कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर ने जो अनाउंसमेंट करी है कि न्यू मेजर ले रहे हैं टू हेल्प टू रिडक्ट वेटिंग, जो प्लीज़ द वेट टाइम, जो काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं। क्योंकि आप देखा जाए तो नैनी की फ़ाइलों को 2-2 3-3 साल हो चुका है, वो स्पाउस केस की फ़ाइल्स को भी 2-2 साल हो गया है, वर्क परमिट की फ़ाइल्स को भी 2-2 ईयर्स भी हो गए, जिनकी LMI बेस थी उन पर अभी कोई रिजल्ट नहीं है। टू इम्प्रूव द क्लाइंट एक्सपीरियंस, हेल्प द मॉडर्नाइज। तो इस पर अब जो इमिग्रेशन सिस्टम है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है, क्योंकि पहले जो फ़ाइल मोस्टली लगी हुई थी वो पेपर बेस लगी थी। तो पेपर बेस की फ़ाइल्स का जो है रिज़ल्ट जो है वो थोड़ा डिले काफ़ी हो चुका है। तो अब उसे सबको ऑनलाइन कर रहे हैं, डिजिटल कर रहे हैं कि वो जो है उसका जल्दी से जल्दी रिज़ल्ट आए। क्योंकि जब पेपर बेस फाइल लगती है तो पेपर बेस उसका कोई अगर कमी पेशी होती है पेपर्स में तो वो पेपर बेस क्लाइंट्स के पास जाता है। अगर ऑनलाइन आपकी फ़ाइल लगी हुई हो तो आपको ऑनलाइन इमिग्रेशन बता देता है कि हमें ये पेपर आपसे चाहिए, ये अपडेट कर दिए, तो इमीडिएटली वो अपडेट भी हो जाता है। तो तो ये मेजर अपडेट करा है, उन वर्क कर रहे हैं ऑलरेडी डन कि जितना भी प्रोसेसिंग टाइम अब तक लगा है उसे रिडक्ट करके इनमें फाइनल रिजल्ट दे। और अब जो है IRC ने इंक्लूडेड हायर करे हैं 500 न्यू स्टाफ हायर करा है कि न्यू स्टाफ हायर करा है कि जिसका ये प्रोसेसिंग टाइप में इफ़ेक्ट पड़े, वो काम करें और जो भी फाइल्स का रिज़ल्ट है वो जल्दी आए। तो ये सारी एप्लीकेशन ऑनलाइन बेस हो रही है। तो जो कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने काफ़ी अनाउंसमेंट करी हैं, वो आपके साथ मैं शेयर भी करूँगी वीडियो। तो अगर देखा जाए तो बैकलॉग पर अब काम होने लग गया है। काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि नैनी का कोई अपडेट आया कि नहीं आया, हमारी फ़ाइल को 2 ईयर्स हो गए, हमने बायोमेट्रिक्स कराया है, तो क्या अपडेट आएगा। तो आने वाले टाइम में सब में अपडेट आएगा, एक्सप्रेस एंट्री वालों के लिए भी आएगा जिनकी फ़ाइल 2020 की लगी हुई है, और वर्क परमिट और स्पाउस केस में। तो कनाडा इमिग्रेशन मिनिस्टर की ये अपडेट है कि मॉडर्नाइज कनाडा इमिग्रेशन सिस्टम सपोर्ट द इकोनॉमिकल रिकवर एंड इम्प्रूवमेंट क्लाइंट एक्सपीरियंस। तो परमानेंट की जो आप एप्लीकेशन लगा रहे हैं पेपर की, अब उसे आपने ऑनलाइन पेपर बेस लगाना है, तो वो फ़ायदेमंद रहेगा क्योंकि इसमें न्यू प्रोसेसिंग टाइम भी आ जाएगा। तो आपने वो ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो आप ये जो है ऑनलाइन पोर्टल में भी जा सकते हो। अगर टेम्प्रेरी रेजिडेंट के लिए आप कर रहे हो वो भी आपने ऑनलाइन ही करना है, जिसमें वर्क परमिट और स्टडी परमिट आ जाता है और विजिटर वीज़ा भी आ जाता है। तो अब जो है 500 जो है न्यू स्टाफ अपॉइंटमेंट करा IRC ने, और सारा इसे डिजिटाइज करा जा रहा है और प्रोसेसिंग जो भी कुछ है वो सारा कुछ ऑनलाइन लेके आ रहे हैं कि आपका जो है क्लाइंट भी जाके अपडेट अपना प्रोसेसिंग टाइम खुद चेक कर सकता है। उसका टूल बनाया जा रहा है। काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि हमारा मेडिकल हो चुका है तो हमारी PPR रिक्वेस्ट कब आएगी। तो अब जाके अगर आप ऑनलाइन फाइन लगाओगे तो IRC जो है अपडेट कर रहा है अपने सिस्टम, क्योंकि आप अपने जाके स्टेटस ऑनलाइन खुद भी चेक कर सकते हो। तो गिवन क्लाइंट्स को मोर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी उनकी एप्लीकेशन स्टेटस के लिए। तो इसमें जो होगा, जो सिटीज़नशिप है वो 60,000 क्लाइंट्स जो हैं उन्हें सिटीज़न सेरेमनी भी होगी। तो वर्क टूवर्ड्स टू रूल जो सिटीज़न सेरेमनी होगी 4 मंथ में फाइनल डिसीज़न आ जाएगा। और ये काफ़ी जो है अब रिडक्ट करा जा रहा है टाइम, जो काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। तो क्यू में काफ़ी लोग हैं जिनका विजिटर वीज़ा, वर्क वीज़ा, स्पाउस वीज़ा, नैनीस लगा हुआ है। तो अब जो है IRC अपडेट कर रहा है अपने सिस्टम को कि प्रोसेसिंग टाइम सारा ऑनलाइन हो जाए, ऑनलाइन फाइल ले, पेपर बेस्ड फाइल कोई ना लगे। तो अब जो है शॉन फ्रेजर की जो अपडेट आया है एप्लीकेशंस के रिगार्डिंग, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वीडियो। थैंक यू। Preventing them to get out of it is also their immigration status in Canada. Is the government planning something regarding such vulnerable women?
First of all, thank you so much for your thoughtful question. The reality of Canadian communities includes the reality of some of the most vulnerable, including people who've been trafficked. And human trafficking is an absolute scourge on our communities and our country. My home province of Nova Scotia has a particular problem that needs to be addressed when it comes to human trafficking. One of the elements of my mandate letter requires me to develop a plan that would formalize or recognize a permanent immigration status for undocumented workers in Canada who've been making a contribution to our communities. We've not yet done the policy work that needs to be done to have confidence that we've developed the right proposal. We do have some lessons that we learned through the TR to PR pilot that granted permanent residency to some folks who were here without permanent or legal status. And we've learned some valuable lessons that has enabled people through the Guardian Angels program, for example, to continue making contributions to our communities once their status has been regularized, without fear that they will be deported if they are discovered. We're actively looking now at the lessons from the TR to PR program, and we'll be discussing this issue with stakeholder organizations and communities across Canada as I seek to develop a plan to advance that mandate commitment to regularize the status of undocumented workers, potentially including some of the vulnerable people that you've mentioned. Right. Minister, my follow-up is regarding the student visas. You mentioned that there will be an increase and it will be expedited. Recently, the case of the family who lost their lives while crossing the border in Manitoba, one of the persons who was caught in the U.S. said he came to Canada on an illegal student visa. Has the ministry or you had a chance to look into the case and see what sort of illegal method was used to get that student visa? Thank you. And I hesitate to get in too deep while I understand an investigation continues. Before I address your question, let me say that this job comes with some real challenging stories, and it requires a degree of compassion when you look at an absolute tragedy with a young family lost in the horrific manner that took place in Emerson or near Emerson. And we do need to do more work to continue to promote regular pathways to Canada. And in this case, for people seeking to go to the United States. When it comes to the student visa program, there are different things that we need to do. By and large, the international student program and the issuance of study permits is an incredible strength for Canada's economy, because we know that international students make excellent permanent residents. They make incredible contributions, and they have support networks and language training and job prospects on graduation. But there are some bad actors who abuse the system. And I believe that we need to, frankly, work with the provinces and territories who have some stake in this too, so we can all do a better job of cracking down on the bad actors. The example you gave is just one, but there's no shortage of stories of students who are left without supports, who come here with a belief they'll be able to study and potentially work, who've been sold a false bill of goods by people who are making significant amounts of money with a cottage industry on the other side of the world to promote their participation in Canada's international student program. We need to be cracking down on those bad actors, the institutions that don't provide supports for their students, and of course people who abuse the system, because fraudulent behavior in Canada's immigration system won't be tolerated. So I can't address the specifics of issues that are under investigation, you can appreciate, but my view is any effort to expand the program needs to be matched with an effort to further crack down on the bad actors who abuse the system. Merci. Prochaine question, opérateur. Thank you. Merci. The next question is from Ryan Tumulty from National Post. Please go ahead. Your line is open. Yeah, good morning, Minister. A couple of months ago, a memo in your department suggested that because of the backlog, the number of federally high-skilled workers that you had planned to accept this year would have to be cut potentially by as much as half. I'm wondering if you think these new changes will avoid a big reduction in your immigration plan, which I understand is coming to Parliament this month.
Thank you very much for that question. And yeah, I do intend to be tabling the immigration levels plan in February. Now that Parliament has resumed, so the issue that you're focused on is an important one. It involves federal skilled workers who are seeking to come to Canada, and the starting point in this conversation for me is whether our economic programs are meeting the demands of the Canadian economy. And I can assure you that our economic programs are doing more for the Canadian economy than they ever had, as we continue to welcome record numbers of permanent residents and continue to have demand-driven programs for those who need workers here on a temporary basis. There are certain challenges that came as a result of our pivot to welcoming more and more people who were already in Canada out of necessity during the pandemic, which I reiterate was the right thing to do at the time to save our immigration system and maximize the potential economic return from an ambitious immigration plan. That has created a situation where we still have significant numbers in our inventory through existing streams aside from the federal skilled worker stream. This puts us in a position where we do have more work to do to clear some of the existing inventory before we can resume draws on the federal skilled workers program. Now, I don't have a date for you specifically today because we need to see how things flow in the months ahead before we can revisit bringing more federal skilled workers in without creating a situation where we know they will be simply waiting in the queue longer than they were previously. But these measures that we've announced today will reduce processing times for people who are in the queue, and combined with the levels plan that we table, which will welcome more and more economic migrants into Canada, is the kind of thing that gives me hope that we'll be able to return to welcoming people through the federal skilled worker program at some point. But we do have some work to do before we get there. And when we have information with specifics on timelines and the date, I'll be sure that we reach out and make that